Hello everyone, good morning. Welcome back to my class 10th Civics series. Before we start, let's discuss two important terms which we are using in our day-to-day life. That is prudential reason to do something and moral reason to do something. मोर गोटे छोट सजेसन भिडियोटी को आपण मैंने 1.5x स्पीड रे देखंतु फॉर बेटर एक्सपीरियंस. ओके, नाउ लेट्स सी difference between prudential reasons to do something and moral reasons to do something. प्रथम आम किसी एग्जांपल्स माध्यम रे बुझिया पय ट्राई करिबा. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय prudential reason? A prudential reason is when you do something because it is good for yourself, it benefits your health, safety, comfort or success. Prudential reason to do something रो अर्थ होची हा जे आमे आमर पर्सनल बेनिफिट बा आमर सेल्फ इंटरेस्ट जो आमे निज पई जते बेले किछ गोटे करूचे ताको आमे कहि परिबा प्रुडेंशियल रीजन टू डू समथिंग. ओके, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड पर्सनल बेनिफिट. ओके, आमे गोटे एग्जांपल नै बुझिबा. सपोज you wear a helmet while riding a bike. Okay, why? What is the reason? Now, because it protects your head in case of an accident. So, what is the reason behind it? कहीं के हमें पिंधुचे आपको जब मैं भल से एनालिसिस करिबा ना, दिस इज ए प्रुडेंशियल रीजन टू डू समथिंग. ओके, बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन सेफ्टी. आम निजर सेफ्टी, आम निजर हेल्थ बा आम निजर बेनिफिट पाई आमे हेलमेट टी वेयर करछे. Okay, so this is the prudential reason. This is all about the prudential reason. Okay, main motive is to personal safety. Okay, main motive we can say safety, success and comfort. Okay, from this focus point कि what is good for me, जेते बेला हम कोनोसी काम करूचे, कोनोसी कार्य करूचे आ ताको हम कहूचे prudential reason to do something. What do you mean by moral reason? Okay, moral reason means when you do something because it is right or it is just or it is valid. Okay, even if it does not benefit you personally, that is the moral reason to do something. Okay, personal benefit न करूथले मध्य हमर सेल्फ इंटरेस्ट रो अगेंस्ट जाउथले मध्य when from the ethical points of view आमे देखुचे what is right and what is wrong, what is just, what is valid, what is rightful, what is lawful. Okay, ए पर्सपेक्टिव जिते बेले आम देखुचे आमको कौन करार अच्छी. ओके, एंड वी आर डूइंग समथिंग, देन दैट इज द मोरल रीजन टू डू समथिंग. ओके, एगेन आम अनदर एग्जांपल नेबा. सपोज यू फाइंड ए लॉस्ट वॉलेट ऑन द रोड एंड रिटर्न इट टू द ओनर. तमे रोड रे गोटे कहार वॉलेट टी पाइल. ओके, तमे कौन कल ना तांको ओनर टी को ताको रिटर्न करदेल. ओके, कहीं तुम तो वॉलेट टी निज पाखे रखी पारथांत. ओके, निज पाखे रखी ना प्रुडेंशियल रीजन दृष्टि आपन पर्सनल बेनिफिट होता. ओके, आपन किसी पाई थांते. बट मोरालिटी कौन कहूँ ना, बिकॉज यू फील इट इज द राइट टू थिंग टू डू इवेन दो यू वॉन्ट गेन एनीथिंग. तुम किसी न पाइबा सत्वे भी तुमको यह फील है जे यह ठीक कि मु ए पर्स टी ए वॉलेट टी ओनर को रिटर्न कर देवाटा बेटर. ओके, बिकॉज फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू आम कौन वैलिड, कोटा वैलिड, कोटा लॉफुल, कोटा जस्टिफाइड, ये दृष्टि जो आम चिंता कले आम पर्सनल बेनिफिट टू अधिक आम प्रायोरिटी देले आमर इमोशन इट गाइड है बाय द ऑनेस्टी एंड एथिक्स. सो दैट इज द मोरल रीजन टू डू समथिंग. इन द केस ऑफ मोरल रीजन, मेन मोटिव doing the morally correct action which is justified. Okay, honesty, justice, empathy, ये सब को हमें बहुत प्रायोरिटी दो एंड हमें बेसी फोकस करो what is right, what is justified from the society point of view which is accepted and valid. Sorry, from the society point of view what is right and valid, not from the personal point of view. So that is the difference between the meaning of prudential and moral reasons to do something. Okay, I hope ये दुटा टर्म को आपण माने बहुत भल से बुझी पारथिबे. ओके, आको हम डे टू डे लाइफ रे बहुत यूज करू. नाउ लेट्स सी फ्रॉम द पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. आज हम डिस्कस करिबा आम टॉपिक, मेन टॉपिक होची आज रो व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. ओके,
There are two different sets of reason can be given in favor of power sharing. One is prudential and second one is moral reason to do something. Moral. Okay, एबे आपण माने बुझी पारथिबे मु काहे कि प्रथमे prudential reason to do something and moral reason to do something को मु बहुत भला भाबे एक्सप्लेन करली. ओके, गोटे छोटो information. This part is very important from the OPSC and from other state civil service or UPSC point of view. ओके, पूर्वर जो एग्जांपल गुडी को आमे पढिले से सब हमके एते हेल्प करिवनी, बट ए पार्ट में जहाँ भी टर्म्स डिस्कस करबा बा जहाँ भी सेंटेंस आमे डिस्कस करबा ए सेंटेंस गुडी को आपण जीएस पेपर लिखिबा समय रे यूज करि परिबे सेंटेंस गुडी को. ओके, बा आपण एसे राइटिंग रे भी आपण व्यवहार करि परिबे एंड बहुत बढ़िया गोटे कांसेप्ट बिल्ड करिबार ये हेल्प करिवो. सो भला बेटी बुझिया पे ट्राई करिबा. सो लेट्स सी टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन in favor of power sharing. First we will discuss prudential reason. Okay, first one, it helps to reduce the possibility of conflict between social group. Just remember the example of Sri Lanka and the example of Belgium. Sri Lanka रे पावर शेयरिंग न होबा जोगु कौन हैला ना टू सोशल ग्रुप्स को भितरे सिविल वार हैला. बट इन द केस ऑफ बेल्जियम, जस्ट बिकॉज ऑफ गुड पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, it helps them to reduce the possibility of conflict. Is not it? Okay. So second, social conflict often leads to violence and political instability. जेतेबेले भी social conflict हुए सोसाइटी हुए कौन ना violence and political instability. So second reason, that is power sharing is good way to ensure the stability of political order. Second prudential reason of power sharing is that जते हमें पावर शेयरिंग करूचे आ द्वारा हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को भी हमें अचीव करि परिबा. ओके, देन थर्ड, imposing the will of majority community over other may look like an attractive option in the short run, but in long run it undermine the unity of the nation. ओके, बहुत बढ़िया पॉइंट. जेतेबेले आमे मेजोरिटी कम्युनिटी मानकर विल को इच्छा को आमे माइनॉरिटीज मानक ऊपर जबरदस्त आमे तांको ऊपर एक्सेप्ट करिया पई बाध्य करूचे, मे बी हिताय पारे शॉर्ट रन रे किछ असुविधा न होई पारे, बट इन लॉन्ग रन ऑब्वियसली नेशन रो एकता यूनिटी ऑफ द नेशन को ये अफेक्ट करिवो. इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन. ओके, नेक्स्ट, टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. Tyranny of the majority, it means हमें कहि पारे मेजोरिटी मानकर जो आतंक. ओके, ये केवल नुह जे माइनॉरिटी मानक पई ही खराब, माइनॉरिटी मानक पई ही ऑप्रेसिव. लॉन्ग रन रे कोन हबो ना ये पूरा कंट्री को ही रुइन करिवो. यू कैन रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका रो एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ डेवलपमेंट, एजुकेशन ए सब धुलिसा थेतला जस्ट बिकॉज ऑफ द tyranny of the majority. So from these 4 points, that is power sharing, it helps to reduce the possibility of conflict. Second, power sharing is a good way to ensure stability of political order. It undermines the unity of the nation. It not just oppressive for the minority, it often brings ruin to the majority as well. So ये सब points रो हमको यह लगुची जे जदि मैं पर्सनल बेनिफिट दृष्टि रो हमें देखिबा. ओके, सेफ्टी दृष्टि जब देखा, सक्सेस कंफर्ट दृष्टि जब आम देखा, आम कहीपर पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. सो वी कैन से वी कैन ये सब सेट्स ऑफ रीजन्स को आम प्रुडेंशियल रीजन टू पावर शेयरिंग अंडर आम रखिपर. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी. फर्स्ट वन, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. व्हाट डू मीन बाय द वेरी स्पिरिट? Spirit of democracy means it means power sharing. Power sharing upholds the core values and principles of democracy. Democracy re without participation, how can we think about democratic society? गोटे डेमोक्रेटिक सोसाइटी लोकंकर पार्टिसिपेशन बिना, लोकंकर पार्टिसिपेशन कथा जेतेबेले कहूचे सेतेबेले पावर शेयरिंग कथा आसुची. पावर शेयरिंग बिना, लोकंकर पार्टिसिपेशन बिना आमे डेमोक्रेटिक सोसाइटी कथा में चिंता करबा केमिति. सो पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू शेयर द पावर. आमे कहिबा जे ना वी आर बिलोंग्स टू डेमोक्रेसी, बट आमे डेमोक्रेसी रो वेरी स्पिरिट को आमे बजाय रखु नथिबा. ये केमिति हबो? दैट्स व्हाई फ्रॉम द एथिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू, फ्रॉम द
which is lawful, which is rightful, which is valid, okay, kon justified, a point of view ame kahi parba. If we are telling that now we are living in a democracy, then we have to share the power. That is the spirit of democracy. Second, a democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. बहुत बड़े सेंटेंस आपण माने आंसर राइटिंग रे यूज करि परिबे. दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज. सपोज वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी. जदि गोटे डेमोक्रेटिक डिसीजन द्वारा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिसीजन द्वारा आमे अफेक्ट होचे बा से इफेक्ट सह आमको एभली कंट्री रे बजाय रहिवार अछि, से भली गवर्नमेंट अंडर रे आमको रहिवार अछि, देन निहाती से भली एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रे जो माने डिसीजन द्वारा अफेक्ट होचंती सेमानंकु आमे डेमोक्रेटिक डिसीजन रे पार्टिसिपेट करेबा निहाती दरकार. Okay, that's why democratic rule involves sharing power with those people, those who are affected by its exercise. Okay, again same cause. People have a right to be consulted on how they are to be governed. Okay, nice point. People have a right to be consulted on how they are to be governed. गोटे छोटा एग्जांपल देवी. जदि आमे माने आमर लीडर को बाछीचे, आमे माने समस्ते मिसिकी जदि आमे गोटे लीडर को बाछीचे एंड आमे तांको किछि रेस्पॉन्सिबिलिटी देइचे, देन ऑब्वियसली से लीडर को भी एटा एथिकल ड्यूटी जे सी आम मानक पई कोनोसी गोटे डिसीजन नेबा पूर्वरु से हमरो कंसल्टेशन नेबे, हमरो मतामत नेबे, एंड दैट इज आवर राइट. That's why in a democracy people have the right to be consulted, and without consultation, without the participation of people, okay, without the participation of institution of the people, लोक मानकर जो इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी लोक मान तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करि परिबेनी एते बड़ डेमोक्रेसी रे. तो लोक माने जहा माध्यम रे डेमोक्रेटिक डिसीजन रे पार्टिसिपेट करूचंती से माध्यम बा से इंस्टीट्यूशंस मानन को कंसल्ट करिबा, से मानन को भितरे पावर शेयर करिबा, दैट इज द एथिकल ड्यूटी ऑफ ए गवर्नमेंट. दैट इज राइट, दैट इज जस्टिफाइड एंड वैलिड. Okay, next reason, that is a legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. What do you mean by legitimate? Same, legitimate माने से rightful, कोटा lawful, कौन justified, कोटा more acceptable, कोटा बेसी valid, that is the legitimate. तो कोटा गोटे valid government, कोटा गोटे justified government, कोटा सबुठु more acceptable form of government in the current world. Contemporary society जदि आमे डेमोक्रेसी रो आरपटे में देखा डिक्टेटरशिप इज देयर, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट इज देयर. यू कैन रिमेंबर कोरियन गवर्नमेंट अंडर किम जोंग, okay, then Germany government under Hitler. Okay, these are the examples of dictatorship, authoritarian government. तो सी गोटे लेजिटिमेट गवर्नमेंट की तो आम क्या गोटे लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहवा. सो लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज दैट आम ताकू कहवा लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट लोक मान द्वारा गठन होती. जदि आमे गोटे इंस्टीट्यूशन तैयारी करिचे, जो इंस्टीट्यूशन आमको शासन करिवो ताहले से इंस्टीट्यूशन प्रॉपर्ली शासन आमको करूची कि नाही, तार भूल ठीक ए सबू का हाथ रे रहिला, लोक मान हाथ रे रहिला. तो कोटा बेटर गवर्नमेंट ना से गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट लोक मान द्वारा गठन ही थाए. सो ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम. सो ए चारटा पॉइंट को जदि आमे भलसे एनालिसिस करिबा देन वी कैन से these are the moral reasons to power sharing. Why? Now because ए पार्ट में देखिले बेले बेले ये सब डिसीजन जोगु ओके शॉर्ट रन रे हे थाई पारे किछि ग्रुप का फेवर किछि डिसीजन न जाई थाई पारे, ओके पर्सनल बेनिफिट न हो थाई पारे, सेल्फ इंटरेस्ट को बाधा दउ थाई पारे. बट फ्रॉम द सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग जते बेले हम डिस्कस करूचे, ओके ये सब पॉइंट्स आसे हमर from what now is वो points justify करे जे power sharing is desirable in a democracy. So this is all about why power sharing is desirable, okay, or you can say the importance of power sharing in a democracy, or we can say why do we need power sharing. Okay, so while prudential decision stress that power sharing will bring out better outcome, जते बेला हमें देखिले prudential decision stress तो कहा को ना power share करिवा द्वारा हमको better outcomes मिल पारिबो, while moral decision emphasize the very act of power sharing as valuable. moral decision कहा को emphasize करूची ना, moral decision emphasize करूची ना कौन justified कोटा valuable, okay, को भली act valid, okay, rightful and lawful.
So this is all about that is prudential reasons to do something or moral reasons to do something or power sharing. So ये गोटे बहुत छोट वीडियो थिला. ओके नेक्स्ट क्लास रे आमे चैप्टर टीर लास्ट पार्ट को सिबा दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड आई होप कि आपन को वीडियो भल लागि थिबो. जदि वीडियो भल लाउची देन लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करने को भूलतुनि. जदि चैप्टर नोट्स दरकार किंबा आपण राइटिंग प्रैक्टिस करने पे चाहूचंती एंड चाहूचंती कि मु ताहाको करेक्ट करिवि ताले कमेंट सेक्शन में जणातु. मु बहुत जल्दी टेलीग्राम चैनल खोलिया जाऊँगी जोटि कि आपण माने मोर नोट्स एंड आमान को भितर गोटे डिस्कशन हो पार वेदर इट इज फॉर OPSC और CBSE एग्जाम और फ्रॉम एनी अदर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ओके थैंक यू वेरी मच.